the big update coming in. The Champai Soren-led government has passed the floor test. They have the majority proven in the floor of the House, Priyank. Yes, certainly that's a breaking input which we are getting for our viewers, that after 1 week of drama, the high voltage drama which started from the national capital, came to Jharkhand, then shifted towards Telangana, has finally ended up, and the JMM coalition has managed to sustain the number of seats in the well of the House. 47 was the number of the MLAs who had formed the government previously, and now 47 MLAs will be there inside this assembly who have shown their faith in favor of the Champai Soren government. Hemant Soren is going to come out anytime soon. We know that Hemant Soren has already told the assembly that although there was no clear-cut instruction from the court that Hemant Soren will be speaking inside the assembly, although we know that the ED officials had told Hemant Soren not to speak inside the House, but he continued to speak inside the House. This is what Hemant Soren has also stated. But the big information which our viewers were waiting to see, the the kind of flux situation which was there in the state of Jharkhand, no one knew that whether the government will come back once again or not. It is going to happen. New candidate who was Champai Soren, the chief minister of the state, more than speaking about him, he spoke about the kind of work which was done by Hemant Soren, has finally managed to win the trust vote inside the assembly of Jharkhand. Out of 81, since one of the MLA had already resigned and his voting was not supposed to be casted today, out of 80 members in the House, 47 has spoken, they stood up and they have shown the trust in favor of the Champai Soren government. These are the visuals of the north porch of the Jharkhand Assembly, where the movement can clearly show you that the former Chief Minister of the state of Jharkhand, the former Chief Minister Hemant Soren, top leader of the JMM government, who has once again managed to form its government in the state of Jharkhand, Hemant Soren will be coming out soon, and from here he will be taken to the Enforcement Directorate office. There was a series of blame game and all these allegations which were raised by the members of the Legislative Assembly, where both sides kept on blaming on each other that this is the stand which need to be followed, which was not followed. But in the visuals, you can clearly see that the kind of security measure which has also been done inside the assembly is for an accused who has now been arrested, who is under the custody of the Enforcement Directorate. Hemant Soren, the former Chief Minister, is going to come out. What was very important to be seen, that instead of him being arrested, the present Chief Minister of the state, Champai Soren, has shown his immense support and the immense faith in Hemant Soren, and what he has said that the Enforcement Directorate, CBI and the IT have been working against the tribal leaders. But very interestingly, the leader for opposition from the Bharatiya Janata Party has said before the assembly that now you can be a tribal leader, but you cannot be shown the leader of the tribal. There you can see Achu's head. Sudesh Mehto is coming out. CP Singh, who is from the Bharatiya Janata Party, has come out. So the BJP leaders are coming out. They are trying to, brief the media. We can certainly show you. Okay, so some more moment here. The MLAs are coming out. We will try to take their response on the floor test, which has now concluded inside the House. But very interestingly, the JMM coalition has managed to secure their vote inside the House. That's a big information which is coming out from the State Assembly of Jharkhand, where after almost a week of high voltage drama which unfolded here, the JMM has finally managed to get the total number of votes here in the State Assembly of Jharkhand. These are the members of Legislative Assembly, the MLAs who are coming out and who are mostly from the Bharatiya Janata Party and the coalition. The MLAs are coming here. We will try to get their response from MLAs who करने का अधिकार है। मैं पहला दिन से बोल रहा हूं कि मैंने कहा कि संवैधानिक पदों में रहने वाले लोगों को अपने ही संवैधानिक विधि से बनाए गए
एजेंसियों का सम्मान करना चाहिए। उधर उस पर का जो आपने भाषण दिया, लोग उसकी प्रशंसा कर रहे हैं जो आपने सदन में अपनी बात रखा, लेकिन इस पूरी परिस्थिति को कैसे देखते हैं? चंपाई सोरेन ने अपना बहुमत साबित कर दिया। मैंने कहा कि बहुमत गिनती के आधार पर है, परिस्थिति जो पैदा हुई उसके आधार पर चार्जेस के आधार पर बना हुआ था, उस पर सरकार बोल रही है। लेकिन जेएमएम कह रही है कि बाबा पे भी इस तरीके के चार्जेस लगे, फिर वो दोबारा सीएम बने, तो ये अभी नहीं कह सकते कि करप्ट है सीएम है। मैं कह रहा हूँ कि उससे उस पर नहीं जा रहे हैं हम। चार्जेज लग सकते हैं, मैंने पहले दिन भी कहा, अपने ही संवैधानिक दायरे में बनाए हुए संस्थाओं का सम्मान करना चाहिए राजनेताओं को। लेकिन अगर ये जो बातें आ रही है, बार बार कहा जा रहा है कि एनडीए के लोग मिलकर जहाँ पे सरकार उनके पक्ष की नहीं है उसको अस्थिर करने की कोशिश हो जा रही है, आरोप है। ऐसी आरोप का कोई बुनियाद है तो बताना चाहिए। ये बेबुनियाद किसी तरह की बात अगर गढ़ के मनगढ़ंत बात करेंगे तो उसका जवाब आपको। लेकिन अब जनता के पास क्या सवाल रहना चाहिए? जो सवाल घटना घटी वही सवाल जनता का भी है, वो इसका जवाब चाहते हैं। लेकिन क्या आपको लगता है इससे जिस तरीके से हेमंत सोरेन ने या वर्तमान मुख्यमंत्री ने अपनी बात रखी और उन्होंने कहा कि एक तरीके से ये आदिवासियत पर टारगेट है, ये मतलब सिंपैथी यहाँ की जन भावना झारखंडियत पे टारगेट है? अपनी बात बोल के एक समुदाय विशेष के सहानुभूति जीत सकते हैं, संवैधानिक शपथों के दायरों को सम्मान नहीं कर सकते हैं, उसका जो एक दायित्व होता है उसका नेतृत्व करते हुए दिखाई नहीं दे रहे। ठीक है। So live reactions coming in. Champai Soren has won the first litmus test as the government has passed the floor test. Priyank continues to stay live with us. Priyank, we cut across to live reactions coming in. The JMM Plus saying that they won the litmus test and they had the numbers. But take us through what's happening there currently and the speech that Hemant Soren gave in the assembly. He spoke about the central agency in the assembly. Yes, certainly. Hemant Soren's speech was very important because he kept on targeting the central probe agencies while he was already. All right, we'll go back to Priyank in just a moment. He is right outside the Jharkhand Assembly. The MLAs are expected to be outside. They will also be speaking to the media. Remember, when they were whisked away to Hyderabad, none of they are confident of the numbers and said that they are going to Hyderabad even though they are confident that they have adequate numbers. There were 47 people in favor, who voted in favor. So Champai Soren has won the litmus test and the government has now passed the floor test. In fact, the special court had also given permission for Hemant Soren to be a part of the floor test. He also addressed the floor and he targeted the central agencies. Like my colleague was also just pointing out, he continued to say that the central agencies were targeting Adivasis, and he said that our fight is going to continue. Even if they arrest us, we are not going to bow down. But big update is that the Champai Soren-led government has won the floor test after getting 47 votes in the 81-member assembly. The arrested JMM leader and former Jharkhand Chief Minister Hemant Soren was present in the assembly to take part in the trust vote. The special court in Ranchi had allowed Hemant Soren to participate in the floor test. Hemant Soren was arrested by the Enforcement Directorate on the 31st of January, after which it had been close to 5 days of complete political turmoil in Jharkhand. Though Hemant Soren, before submitting his resignation, had spoken about being targeted by the agencies. Before he was arrested, he had already put a succession plan in place. He had said that Champai Soren would take over. He resigned as the Chief Minister of Jharkhand, after which he was taken into custody by the Enforcement Directorate. On the 2nd of February, he was remanded to 5 days custody by the court. So until now, the MLAs were not even in Ranchi or Jharkhand. They had in fact been taken to Hyderabad over fears of poaching.
झारखंड में ये एक बहुत पुरानी प्रथा है कि इलीगल माइनिंग कहते हैं इसको, उनके साथ तस्वीर खिंचाते हैं। अभी ये तस्वीर मैंने देखा और मेरे मन में यही विषय आया था। हाँ। ये एक इस तरह की परंपरा रही है, इस तरह से लोग अपना आजीविका का पालन करते हैं। हाँ। और कभी कभी कानून, सरकार इस सब चीजों को अनदेखा करता है, लेकिन एक देश के शीर्ष नेता इस बात को लेकर कि मैं लेबर के चॉइस में आ गया, मैं इतना बोझ उठा सकता हूं, लेकिन ध्यान रखना चाहिए वो लीगल माइन का नहीं है। इलीगल चीजों को बढ़ावा देते नजर आ रहे अब इसके 2-3 संदेश हो सकते हैं। एक संदेश ये होगा जो वो दिखाना चाहते हैं, we were trying to Okay, so Priyank Tripathi joining us from right outside the assembly. He was speaking to the MLAs. Champai Soren has won the floor test and he won the test of strength in the assembly, and this is after 3 days of him taking oath as the chief minister of the state. But an emotional speech was made by Hemant Soren in the assembly where he spoke about being targeted, but he said that he is not going to shed tears because the tears of tribals and backward sections do not matter to the government, to the center. That's a statement that he made. He also को इसके लिए बधाई। जी, क्या कुछ डर था जेएमएम प्लस में कि शायद फ्लोर टेस्ट के दिन कुछ हो जाए, शायद नंबर्स ना हो? बिल्कुल भी नहीं। देखिए, झारखंड के अंदर में पूर्ण बहुमत की सरकार पहले से थी, लेकिन उसको हिलाने ढुलाने की नाकाम कोशिश भारतीय जनता पार्टी के द्वारा पहले दिन से होती रही थी। तो जैसा कि हेमंत सोरेन जी ने कहा था, ना हम झुकेंगे, ना हम डरेंगे, हम लड़ेंगे, और हमने लड़ने का काम किया है। और ये आज फिर से जो विश्वास मत हमने हासिल किया है, ये भारतीय जनता पार्टी के मुंह में एक करारा तमाचा है। अच्छा, लेकिन आपको लगता है कि डर नहीं था तो फिर काफी एमएलए थे जिनको लेके गए थे आप हैदराबाद, वाज देयर अ फियर कि शायद कुछ पोचिंग हो जाए? देखिए, जिस हिसाब से जो राजनीतिक हालात हैं पूरे देश में, और जिस तरीके से बीजेपी चुनी हुई सरकारों को और विधायकों को परेशान करने की कोशिश करती है, उसमें प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो वो प्रिवेंटिव मेथड था जिसका इस्तेमाल सब कोई आज के डेट में करते हैं। ओके, और लास्टली आप हेमंत सोरेन ने जो मैसेज दिया असेंबली, उस पर आप क्या कहेंगे? ना झुकेंगे, ना डरेंगे, हम लड़ेंगे, आपने बताया ये मैसेज दिया उन्होंने, लेकिन बीजेपी ने ये कहा है कि उन्होंने ये कहा था कि आदिवासी समाज को टारगेट किया जा रहा है, लेकिन बीजेपी ने ये कहा है कि अगर उनके अगेंस्ट करप्शन एलिगेशंस हैं तो वो किस समाज से हैं वो मैटर नहीं करता है, उनके अगेंस्ट करप्शन एलिगेशंस हैं, दैट्स व्हाई द सेंट्रल एजेंसी इज टेकिंग एक्शन। किसी तरीके का कोई करप्शन एलिगेशन नहीं है। झूठे आरोप लगा करके हमारे नेता हेमंत सोरेन जी को जेल भेजने की कोशिश हुई, और भारतीय जनता पार्टी को अगर ये लग रहा है कि वो एक आदिवासी को, एक आंदोलनकारी पार्टी के नेता को अगर जेल भेजे करके अगर जीत हासिल कर लेगी, तो ये इनकी भूल है। हेमंत सोरेन जी और विराट लूप लेकर के बाहर आएंगे और फिर से झारखंड का नेतृत्व करेंगे, यही संदेश है। और वो ना डरेंगे, ना बीजेपी के सामने घुटने टेकेंगे, बल्कि बीजेपी के अपने घुटने पर बीजेपी नहीं रह पाएगी। ओके, लेकिन कोर्ट की तरफ से अभी उनको रिलीफ नहीं मिला है। तनुज खत्री जी, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। इनफैक्ट हेमंत सोरेन आल्सो एड्रेस्ड द असेंबली लाइक वी जस्ट स्पोक अबाउट। हियर्स व्हाट ही सेड। 31 तारीख रात को देश में पहली बार किसी मुख्यमंत्री का गिरफ्तारी हुई हो, मेरे संज्ञान में नहीं है। ये मुझे लगता है ये पहला घटना है, और मुझे लगता है इस घटना को अंजाम देने में कहीं ना कहीं राजभवन भी शामिल रहा है। आज मुझे किस लिए अरेस्ट किया गया अध्यक्ष महोदय? 8.5 एकड़ जमीन के घोटाले पर। अगर तो कागज पटक कर दिखाए कि 8.5 एकड़ का जमीन हेमंत सोरेन के नाम पर है, अगर होगा मैं उस दिन से राजनीति से इस्तीफा दे दूंगा। अध्यक्ष महोदय, जब राजनीतिक रूप से ये नहीं सकते तो ऐसे ही बैकडोर से हमला करते हैं, पीठ पर हमला करते हैं।
So does that mark the end of the political turmoil in Jharkhand?